First of all, my deep gratitude for extending such a beautiful training on empathy. I think this subject is a very pertinent with reference to our normal life as well as planned life, and in day-to-day problem we face application of empathy, very pertinent and very insightful. अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ सैयद समरान मसूद, मैं फ़ौजी फर्टिलाइज़र से हूँ और ये डॉक्टर साहब की वर्कशॉप हम अटेंड कर रहे हैं 2 डेज़ की एम्पैथी पे थी। इट्स वंडरफुल। हम बहुत अरसे से एम्पैथी तो हम हमेशा करते रहे हैं, सुनते रहे हैं, लेकिन इस ट्रेनिंग में हमें एक नई डायमेंशंस जो है ना नज़र आई हैं। हमने बहुत कुछ हमें सीखने को मिला। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा कामिल है एंड आई एम फ्रॉम FFC. आई एम वर्किंग हियर एज एग्जीक्यूटिव HR. I am lucky enough to get this opportunity to attend training regarding empathy by Mr. Yasir, and it was a very fulfilling experience, I would say. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नूरुल हसन है और बाय प्रोफेशन मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। राइट नाउ वी आर इन प्रोसेस ऑफ गेटिंग एक्सपोजर विद मिस्टर यासिर मसूद्स वर्कशॉप जो कि बेस करती है एम्पैथी पे। मैं ये कहूँगा कि बीइंग टेक्निकल पर्सन हमारी ये डायमेंशन कि एम्पैथी को किस तरह इस्तेमाल करना है वर्क मैनेजमेंट के लिए, एम्प्लॉयज़ की मैनेजमेंट के लिए काफ़ी वीक होती है। तो इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। एक नई डायमेंशन मालूम हुई है ह्यूमन साइकोलॉजी की।